Good afternoon, everybody. Today we are back with some words, verbal ability. Words are very important. We want to learn a language. The first thing you have to do is to learn some powerful words, the synonyms we were dealing with. And today we are doing the antonyms or opposites. So these words are going to help a great deal in passing an exam or just knowing your English, speaking English or writing English. It's very important to brush up your vocabulary. And the more the better. जितनी ज़्यादा आप जानेंगे उतना बेटर होगा. और अच्छी भाषा के लिए शब्दों का महत्व बहुत ज़्यादा है. तो आज हम लोग देख रहे हैं ऑपोजिट्स या एंटोनिम्स. स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सम वर्ड्स. सिक्योर. कोई चीज़ सिक्योर होती है. समथिंग इज सेफ. लाइक योर जॉब इज सिक्योर. एंड अगर आपका जॉब सेफ नहीं है तो it is not secure, it is unsafe. Another word you see is valued or something which is valuable. A valued customer, it means a very important customer, somebody who is very valuable. And opposite क्या होगा इसका? Useless. Something which is valued, something which is useless or not that important, not that valuable. The third is included. If your name is included in a team, it means you are in the team. And when you are out of team, you are excluded or an outcast. Outcast may not be the real word, but then excluded. You are not included, you are excluded from the team. Included in the team and excluded from the team. So let us take a look at some other words. We have taken up 5 words today. और पहला वर्ड जो है वो है abundance. Abundance noun है, मतलब बहुत ज्यादा. Abundant adjective हो है. Abundance is a noun meaning plentiful, बहुत ज्यादा. Available in a large quantity. We have abundance food, मतलब हम लोगों के पास food in large quantity है. Abundance. इसका एंटोनिम क्या होगा? बहुत ज्यादा है तो बहुत कम होगा नेचुरली. सो स्कैसिटी ऑफ फूड, कोई चीज की में कमी. अबंडेंस बहुत ज्यादा. अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी. एंड इसका एंटोनिम स्कैसिटी, मतलब कमी. और लिटिल ऑल्सो. और इनसफिशिएंट. वर्ड्स तो बहुत ज्यादा हैं, बट लेट अस टेक अप 3 words at a time. So the word is abundance, and ये abstract noun है. And the antonym scarcity, कमी. Little, कम. And insufficient, it means पर्याप्त मात्रा में नहीं. Now let us look at some sentences. The most important is the words, and the usage is equally important. मतलब कैसे उसको use करेंगे ये भी important है. So the first word is scarcity, कमी. Scarcity of time upsets me. मतलब समय की जो कमी हो जाती है तो वो upset करती है. Scarcity of time. Supposing you are giving आप एग्जाम दे रहे हैं और एक क्वेश्चन बाकी रह गया, टाइम नहीं है, तो स्कैसिटी ऑफ टाइम, जो कमी हो गई है टाइम की, वक्त का जो कमी में, उसमें जो कमी आ गई है तो उसमें दैट अपसेट्स यू. आप परेशान हो जाते हैं कि कुछ और वक्त मिल जाता तो मैं ये पूरा कर लेता या कर लेती. तो स्कैसिटी ऑफ टाइम अपसेट्स मी इन एग्जामिनेशन. कहीं आप चाहेंगे कि टाइम को रोक लें और आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि समय कुछ और बढ़ जाए, लेकिन वो होता नहीं. तो स्कैसिटी ऑफ टाइम अपसेट्स मी. कमी किसी चीज की भी हो सकती है. द सेकेंड वर्ड इज लिटिल. आप जानते हैं लिटिल थोड़ा कम. इट टेक्स अ लिटिल एफर्ट टू बी काइंड. इट टेक्स, बहुत काइंड होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. जस्ट अ काइंड वर्ड, एक अच्छी तरीके से बात करना, एक अच्छा वर्ड यूज करना. सो इट टेक्स अ लिटिल एफर्ट. मेहनत कम लगती है काइंड होने में. विच यू ऑल मस्ट बी. लिटिल. इनसफिशिएंट मीन्स जितना होना चाहिए उतना नहीं है. Insufficient. She had insufficient balance to call her friend. Balance क्या था? Insufficient, not enough to make a call. So
The first word was abundance. It means in large quantity, plentiful. And उसका antonym है scarcity, little and insufficient. The second word today is despair. Despair is a very negative word. Sadness, unhappiness, distress, परेशान हाल, मतलब लगता है कुछ अच्छा होगा ही नहीं. In despair बहुत कुछ हो जाता है. Despair में आप डिप्रेशन में चले जाते हैं. In despair, not a good word, but then despair is a word today. The second word, इसका मतलब होता है उदासी और मूड ऑफ हो जाना, डिप्रेस्ड रहना, डिस्ट्रेस्ड में आ जाना. तो despair is a word. The meaning of which is sadness, unhappiness, distress. Antonym क्या होता है? बिल्कुल the positive words of course. Happiness, खुशी, joy, खुशी वो भी, and delight. मतलब कोई चीज देख के आप खुश हो जाते हैं. So the second word is despair, and the antonyms are happiness, joy, and delight. Let us take a look at some sentences. Now, why I want you to make your own sentences, because you must know how to use them. Happiness. He could not hide his happiness after seeing his result. अपना result देखने के बाद वो अपनी खुशी को छुपा नहीं सका. He could not hide his happiness. The word joy. Life is a game of despair and joy. Life is a game of ups and downs, happiness and sadness. So life is a game of despair and joy. If you take life as a game, और गेम में तो जीत हार होती है, तो कभी अपसेट मत हो जाइएगा जब आप डिस्पेयर में आ जाएंगे. एंड डू नॉट बी टू जॉयफुल व्हेन यू आर in a happy mood. So it takes life takes joys and sorrows both. So life is a game of despair and joy. Delight. Knowledge delights the wise. किसी भी तरह का नॉलेज जो होता है, ज्ञान जो होता है, वो खुशी देती है. चाहे कोई भी किसी भी चीज की का ज्ञान, आप कोई नया वर्ड सीखते हैं वो भी आपको ज्ञान दे देता है. And that delights you. The knowledge of learning a new word, the knowledge of learning a new language, the knowledge of learning some technical skills. So knowledge delights the wise. जो होशियार होते हैं उन्हें खुशी होती है कि आज हमने कोई नई चीज सीखी है. So knowledge delights. Delight यहाँ पर use as a verb. Otherwise, happiness also is a noun, and joy is also an abstract noun. Delight can be used both as a noun and as a verb. So knowledge delights the wise. The third word today is frequently. Frequently is an adverb of frequency. कोई चीज कितनी बार आप करते हैं. Often, प्राय, regular, अक्सर करते हैं. Usually, I do it usually. It means all the time. Most of the time I do it. इसके antonyms क्या होगा? Rarely, मतलब शायद ही कभी. Hardly भी वही मतलब होता है. Hardly बहुत wrongly misunderstood word है. Hardly means most of the students have reported that hardly means something is very difficult. The maths exam was hardly. No. Hardly means शायद ही कभी. Rarely, बहुत कम. So, rarely, बहुत कम. Hardly, बहुत ज़्यादा कम. And seldom मतलब शायद नहीं के बराबर. So these are the opposites of the word antonym, which means frequently. Frequently का antonym है rarely, hardly, seldom, and there are many other words. But let us take down the first three words. The sentences to go with it. Sentence. I rarely go to the cinema hall. I rarely go to the market. I rarely go for outings. और जब एग्जाम्स आता है तो आप शायद ही कभी बाहर जाते हैं. I rarely go out. अभी कौन जाता है सिनेमा हॉल्स में? You all watch movies at home. So शायद ही कभी. I rarely go to the cinema halls. After college we hardly meet. After college we hardly meet. कॉलेज के बाद हम लोग शायद ही कभी मिल पाते हैं. जब तक कॉलेज में रहे मिले, घर चले गए फिर तो we'll meet the next day. So after college
we hardly meet. Seldom. आपने सुना होगा proverb, barking dogs seldom bite. मतलब जो dogs जो भौंकते हैं, bark करते हैं, वो काटते नहीं है, वो अपना जलवा दिखाते रहते हैं, लेकिन काटेंगे नहीं वो, जैसे गरजते हुए बादल बरसते नहीं, उसी तरह से बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यहाँ सेंटेंस है। आई सेल्डम स्किप माई ब्रेकफास्ट, मतलब शायद ही कभी मैं अपना ब्रेकफास्ट स्किप करती हूँ, इसलिए कि ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीबडी हु इज हेल्थ कॉन्शियस। तो सेल्डम शायद ही कभी, रेयरली शायद ही कभी, हार्डली बहुत कम, नहीं के बराबर। एंड दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली अक्सर, ज्यादातर, यूजुअली, मतलब अक्सर जो आप करते हैं। एंटोनिम्स क्या हो गया? रेयरली जो आप बहुत कम करते हैं, नहीं के बराबर करते हैं। So rarely, hardly, seldom is the antonym of the word frequently. और ये सारे के सारे words हैं adverb of frequency, adverbs of frequency. The next word, feeble. Feeble, कमजोर, weak, infirm मतलब बीमार, frail बहुत कमजोर, and इसका एंटोनिम हो गया powerful. Powerless. इसको पावर नहीं है, ठीक है? वीक है, इनफर्म है, कमजोर है, फीबल. देयर वाज अ फीबल स्माइल ऑन हर फेस, मतलब बहुत हल्की सी हंसी थी. फीबल, कमजोर. ही वाज फीबल बिकॉज ऑफ द इलनेस. तो बीमार, वीक, इनफर्म. इनफर्म का मतलब होता है बीमार. एंड फ्रेल, वेरी 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 सिक, फ्रेल, कमजोर. So these are the words, the meaning of which feeble. इसका एंटोनिम्स क्या होगा? इट्स वेरी वेरी इजी. एंटोनिम्स होगा स्ट्रॉन्ग, इट मींस वीक एंड स्ट्रॉन्ग, यू ऑलरेडी नो. इनफर्म, बीमार, और ऑपोजिट हो गया हेल्दी. एंड फ्रेल, वीक. वीक विथ somebody who is old and frail and weak, it means बहुत दुबला पतला, कोई बीमार सा इंसान. और the third word which I have taken is stalwart. Stalwart is something very powerful, a word, somebody who is very powerful or very forceful. Stalwart, all the opposite of feeble. Somebody who is frail, opposite क्या हो गया? Stalwart is the, कोई कोई बहुत दिखा गया है कि stalwarts of the company, मतलब the pillars of the company. So stalwart is somebody who is very powerful, somebody who is very potent, somebody who is strong in mind, body, and character and everything. Stalwarts of the company, it means the main person, the powerful persons of the company. Now let us take a look at the antonyms, the sentences. So the word was feeble, and the sentences are strong. Be a person of strong character. It means being a person of strong character means एक ऐसा पर्सन बनिए जिसका, जो कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का, स्ट्रॉन्ग पर्सन. बी अ पर्सन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. The second word, healthy. The child is now robust and healthy. It means the child is now robust. Robust is also another word for healthy. Robust and healthy. The child now is robust and healthy. And stalwart. He was a stalwart believer in hard work. It means he was a manager, he was a person working in a company, and he was a stalwart believer in hard work. So these were the antonyms of the word feeble. Feeble means weak, and the antonyms are strong, healthy, stalwart, powerful, or somebody who has a lot of strength. Coming to the next, the fifth, optimist. Hopeful, visionary, seeing the bright side of things. So optimist means somebody who sees the bright side. Ashavadi. If you're an optimist, you are looking at the bright side of things, like taking a glass of water. If it is half full, you will say, of course, it is. At least I'll take this because it is, at least something is better than nothing. कम से कम आधा तो
है उसमें. And the opposite is the pessimist. It means somebody who will say, who always looks at the dark sides. कि आधा तो खाली है तो लेना ही क्या है. The pessimist, hopelessness, dark side of, who sees the dark side of everything. So just remember the two words, optimistic, जो है आशावादी, and pessimistic, antonym, which means somebody who looks at the clouds only, does not look at the rainbow. Somebody who sees the dark side of things, and an optimist who sees the bright side of things. Let us take a look at some sentences and then we'll wind up today. Pessimistic is another word, pessimist and pessimistic. A pessimistic approach should be avoided. And pessimist, a pessimist is one who looks at the dark side of everything. So in life, be an optimist, never a pessimist. Like you see, this is the person, the picture. He's the optimist who sees the sun and the brightness, whereas the pessimist sees the clouds and the rains and nothing is going to go right. So उनको लगता है कहीं कुछ अच्छा मेरा होगा ही नहीं, nothing will be fine with me. But an optimist person, even in adverse conditions, he feels that yes, something will come out, and he sees the best in every worst situation. So that's all for today, and we'll come back again with some words, sentences, and of course a guide to how to make sentences and the pronunciation also as well. So one lesson and many points. So that's all for today, and we'll be back tomorrow. Okay.